Okay, so I'm live again as promised by me that I will be explaining you a thing of beauty. So I'm live and I hope that I'm audible to everyone. मैं आशा करता हूँ कि मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ. मैं थोड़ा चेक कर लूँ 2 मिनट को. Okay, am I audible to everyone? शायद माइक के सेटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ है. मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ. Okay, I'm audible now. Yes. Okay. Hey sir, I hope you're doing great. Actually, I'm in class 10. I want to talk to you personally regarding my studies. Yes, sure. I'm available on Instagram also. You can have a chat with me on Instagram. Okay, you can personally message me there also. No problem with that. Yes, sure. Okay, so I hope that all of you can hear me. Okay, आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं. मैं आशा करता हूँ कि सब लोग मुझे सुन सकते हैं और okay. Alright, so a thing of beauty. Okay, we are going to learn the a very beautiful poem in the core English syllabus. ये core English syllabus में है आपके in class 12. Okay, in class 12, and it is called a thing of beauty, and I'm going to do here a line by line explanation as I always do. After the session I will message you definitely. Nizat Noor, definitely you can message me on Instagram. I hope you are following me on Instagram also. ओके आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आई विल अटेंड टू यू पर्सनली ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. थिंग ऑफ ब्यूटी कोर इंग्लिश syllabus class 12 मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड आई एम गोइंग टू डू हियर अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैं एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा आप सबको. तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. द पोम इज वेरी शॉर्ट, नॉट अ बिग पोम. ओके, तो मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों को खत्म कर दूंगा. तो लेट मी नॉट रीड द एंटायर लाइंस. ओके, मैं पूरा एंटायर लाइंस रीड नहीं करता हूँ. यू कैन सी हियर. ओके, लेट मी रीड स्टैंजा 1. Okay, in that case, thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. And let me tell you that, and at the end when the poem will finish, okay, when the explanation of the poem will be over, then I have provided some important word meanings. अगर आप लोगों को word meaning समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने लास्ट में जो है वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स या डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स का एक सेक्शन रखा हुआ है. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टैंजा 1. If you look at your book, you'll see that the lines are not divided into stanzas. The poem is not divided into stanzas. But here, for your better understanding, I have divided it into different stanzas. Okay, you can mark with pencil in your book from a thing of beauty till a quiet breathing. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन क्या है? नाउ द पोम स्टार्ट्स विद द फेमस लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. नाउ this particular line comes open as amplification also.
ओके, ये एम्पलीफिकेशन के दौर पे भी आता है. इट्स अ वेरी फेमस लाइन that we often use. Okay, a thing of beauty is a joy forever. What does it mean? Which means that something beautiful always brings happiness to people. तो कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी, एनी थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, खुशी लाता है हर किसी की जिंदगी में, और ये खुशी जो है ये परमानेंट है. एनीथिंग विच इज ब्यूटीफुल ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरीबडी, एंड दिस ब्यूटी एंड दिस जॉय इज समथिंग विच इज फॉर एवर, एवर लास्टिंग, जो कभी ना खत्म होने वाला ब्यूटी और जॉय है. द पोएट बिलीव दैट द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग विल नेवर फिनिश. तो पोएट ये मानते हैं, और पोएट ने यही लिखा है, द पोएट हैज रिटन दैट द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल थिंग, the beauty of this beautiful thing will never finish. Anything which is beautiful, that beauty will never be finished. Okay, instead it will only get lovelier over time. जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये beautiful चीज और ज्यादा beautiful होता जाएगी. Anything which is beautiful will never finish. Instead the beauty will get on getting more beautiful over the time. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और भी ज्यादा beautiful होता जाएगा. Okay, then the poet then talks about how important this beautiful thing is to us by comparing it to various other things. So अगर आप stanza 1 फिर से देखिए, you can keep your textbooks open, okay? It will help you because I cannot go back to the poem again and again. You know, तो teaching में थोड़ा सा difficulty हो जाएगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप किताब हाथ में रखिए और आप देख सकते हैं. The poet then talks about how important this beautiful thing is to us. See, what is that beautiful thing? The poet is not telling only one thing. There are many things. Those are beautiful. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सुंदर है, और poet जो है उन्हीं चीजों के लेके एक कंपैरिजन कर रहे हैं. Poet is presenting all those things which are beautiful. Okay, and what are those things? Okay, देखिए एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो सुंदर है. Poet ये नहीं कहता कि that only a particular thing is beautiful. The poet says that the poet is going to give example of various things which are beautiful to us, and we must appreciate those beauties. हमें उन beautiful चीजों का हमेशा तारीफ करना चाहिए, हमेशा जो है thankful होना चाहिए. Okay, he says that it's like a peaceful shelter for us. Anything which is beautiful is like a peaceful shelter for us, similar to the calming shade of plants. तो poet सबसे पहले comparison provide करता है. देखिए comparison क्या है? The first comparison that the poet makes, the first beautiful thing that the poet mentions is like the shade of plants. Okay, when you are tired, say you are walking and you're tired, and then you see a very big tree in front of you. What do you do there? You rest under that tree. आप उस पेड़ के नीचे जो है, पेड़ के छाव के नीचे आप थोड़ा अपने आप को काम करते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करते हैं. उसके बाद अगेन यू स्टार्ट वॉकिंग. So anything which is beautiful, the first example is the shade of plants. It gives us peaceful shelter, है ना. तो पेड़ पौधे हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें छांव देता है, धूप से बचाता है. फिर और क्या देता है? हमें फल देता है. It gives us vegetables, fruits, edible things. Furnitures are made of that. Okay, and we can get, we can relax ourselves when we are tired. Okay, then the next comparison is what? It is also like a deep sleep filled with pleasant dreams, good health, and calm breathing. So a plant is very important to us, right? A plant is very important to us. It gives us shade. It is also like a deep sleep. Calmness का एक और अगर हम comparison करें तो deep sleep which is filled with pleasant dreams, good health. A plant is connected to good health also, and calm breathing. We know that plants provide us oxygen. Don't write all these things. I'm trying to explain you in a very simple language so that you can understand. I'm breaking down the difficult things into simple things so that you can understand. So calm breathing also we get from plants, right? My favorite teacher from class 10. Thank you so much. Shildahun, thank you so much. Thank you so much. Hi sir, can you provide or upload an explanation video on? Yes, on doing nothing. On doing nothing. Divakar Sunar, on doing nothing. The next video I'll try to put is on doing nothing. Okay. आप लोग टेंशन मत लीजिएगा. Don't take tension. I'll be completing your syllabus also. I'm shifting class 11 and 12 now. Okay, and class 10 also. Even class 10 also. Some many students are asking me to provide important questions. Okay, I'll provide that also. Don't worry. Okay, तो हम लोग चलते हैं कि by comparing the beautiful things to all these aspects, trees, okay, all these aspects like shade of plants and all. By comparing the beautiful things to all these aspects,
the poet wishes to show that these things actually it plays a very significant or important role in human life. ये जो सारी चीजें हैं, okay, there will be many more comparisons, और ज्यादा comparison आएगा. जैसे पहला example, it was on plants, trees. Okay, so the poet wants to show that these aspects, these beautiful things are very important or play a very important role in our human life. हमारे इंसानी जिंदगी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सारी चीजें, जिसका एग्जांपल पोइट ने अभी अभी दिया है. ठीक है. स्टैंजा 2 क्या है? Therefore on every morrow are we weaving a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways. ये over है, OVER. ओके, इसको पोएटिक लैंग्वेज में V is kept silent and an inverted comma is put here, single inverted comma. Over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. Important word meanings you will find after the explanation. Explanation के बाद आपको important word meaning जो है समझ में आ जाएगा. Thank you sir for covering this poem. I was not getting it, Shriya Gupta. Yes, that is why actually I brought this poem. I know it's a very important poem and a very beautiful poem also, and that is why I have broken this difficult thing into a very simple explanation. And from the writing itself, you can get notes also. Okay, that is why I have written. I'm presenting the screen in front of you. From here, you can get all the important notes also. So, what is the explanation of stanza 2? So, stanza 2 कहाँ से कहाँ तक? In the book, if you see, it is not divided into stanzas. But here, for your convenience, आपके understanding के लिए मैंने इसको divide किया stanzas में. So, therefore, on every morrow से लेकर dark series तक stanza 2 आएगा. ठीक है? आप लोग उसको divide कर लीजिए अपनी book में, so that you can understand it better. And I would prefer you keep the book in front of you. ठीक है? जब भी आप ये explanation देखें, when you have time, please keep the book in front of you. So what is the explanation for stanza 2? In the next part, that is the stanza 2. In the next part, in stanza 2 of the poem, the poet explains that since the beautiful thing is really important to us, so every morning we gather the charming qualities of beautiful things like collecting flowers and create a band out of it that brings us joy. तो poet ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो सुंदर है. There are many things which are beautiful and every beautiful thing gives us joy. तो पहले एग्जांपल प्लांट्स का था. दूसरा एक जो एग्जांपल है वो है लाइक कलेक्टिंग फ्लावर्स. एंड व्हाट डू वी डू विद दोस फ्लावर्स? छोटे छोटे चीजों से, फ्रॉम स्मॉल स्मॉल टाइनी थिंग्स वी गेट हैप्पीनेस. खुशी बड़ी चीजों से नहीं होता. आपने आईफोन खरीदे, इससे कोई खुशी नहीं है, तो टेम्पररी है, कभी भी खराब हो सकता है. बट फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स लाइक कलेक्टिंग फ्लावर्स early in the morning. There are many people who collect flowers early in the morning, offer it to goddesses. Okay, so the charming qualities of beautiful things. अब poet qualities बता रहा है. Any charming thing has got plenty of qualities. What is the quality? Like collecting flowers, creating a band, a garland out of it. आपने garland बना लिया फूलों का, and that gives us joy. है ना? इन छोटी छोटी चीजों से जो है हमें बहुत खुशियां मिलता है. Okay, Melamson, hello sir, I am so excited. Thank you so much. Yes, Melamson, actually on your request only I am making this video. Okay, Melamson, आपके रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाया है. थैंक यू सो मच सर. सर रिक्वेस्ट माय नेक्स्ट वीडियो व्हाट मैन लिव बाय. थैंक यू सो मच. ओके, आई विल मेक व्हाट मैन लिव बाय आल्सो, बट वन स्टूडेंट हियर इज दिवाकर सुनर हैज रिक्वेस्टेड मी टू मेक एन एक्सप्लेनेशन ऑन डूइंग नथिंग. ऑन डूइंग नथिंग के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन कहा है क्लास 11. सो क्लास 12, right now it is class 12 explanation going on. Next video will be on class 11. Then definitely I'll come back to you Melam Sonar again for what man lives by. I promise. Okay. लेकिन सबसे पहले मैं दिवाकर जी का रिक्वेस्ट रखना चाहूंगा on doing nothing from class 11. Okay. So the flowers, actually we can create a garland out of a flower. Band here is a garland out of a flower, and that small thing can give us immense joy. है ना? And you see, life has its sad moments. हर किसी की जिंदगी में दुखी moments आते हैं. There are sad moments in our life, and in our harsh materialistic life we often lack a connection with nature. ये सबसे important है. All the examples that the poet has given are all of nature. सारे examples जो poet ने दिए हैं वो सारे natural elements के हैं. The poet is not mentioning here about money. Many say that money gives us happiness. No, money does not give us happiness. Money से हमें खुशी नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि मनी एक ऐसा चीज है जो खत्म हो सकता है. एनीथिंग दैट पेरिशेस और एनीथिंग दैट गेट ओवर, कुछ भी, कोई भी चीज जो खत्म हो जाता है,
वो हमें कभी खुशी नहीं देता। खुशी हमें वही चीज देता है, हैप्पीनेस वी गेट ओनली फ्रॉम दोज थिंग्स विच आर इटर्नल, एंड दैट इज ओनली नेचर। नेचर से ही हमें इटर्नल खुशी मिलता है, नॉट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। So we are surrounded by the material world actually, and we often lack connection with nature. हम nature के साथ connection जो है ज़्यादा नहीं बनाते, because we have become materialistic, money minded. Matter actually, it is the materialistic thing that matters mostly to us. That is wrong according to the poet. So we lack connection with the nature. We face unhealthy situations, sorrows, failures. हम जो है अनहेल्दी सिचुएशंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में, वो ऑफन फेस अनहेल्दी सिचुएशंस, वी फेस सॉरोज, वी फेस फेलियर्स आल्सो इन आवर लाइफ। ओके, हाउएवर, फिर भी डिस्पाइट ऑल दीज ग्लूमी थिंग्स, अ ब्यूटीफुल थिंग कैन रिमूव दिस ट्रबल्स एंड ब्रिंग अस जॉय एंड पीस। लेकिन फिर भी पोएट ये कहता है कि हर किसी की जिंदगी में दुख है, वी ऑल फेस विद फेलियर, सॉरोज, अनहेल्दी सिचुएशंस, but still, if we look at any beautiful thing, that beautiful thing can remove these troubles, these tensions, and bring us joy and peace. कोई भी सुंदर चीज जो है हमारे जिंदगी से, हम जब भी दुखी होते, whenever we are unhappy, तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो है उस सैडनेस को, उस सॉरो को रिमूव कर सकता है। एनी ब्यूटीफुल थिंग, ओके, एंड गिव अस पीस ऑल्सो। सिर्फ जॉय नहीं, जॉय के साथ पीस भी है। ठीक है, then you see stanza 3. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils, with a green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot season, the mind forest break, rich with a sprinkling of fair masked rose blooms. ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मेलामसोन मेलामसोन ने फिर से कमेंट किया, यू आर द रियल टीचर फॉर मी, माय बेस्ट टीचर एवर सर। थैंक यू सो मच, thank you so much Melamson for these kind words of yours, and I'm really yesterday I brought a video. I was a little bit upset actually, कल मैं थोड़ा सा upset था, और अपसेट इसलिए था क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। आज भी एक कमेंट मैंने देखा, और मुझे, मैं कभी ऐसा करता नहीं था, लेकिन मैंने उस कमेंट को रिमूव कर दिया कि किसी ने लिखा कि आप बकबक बहुत करते हैं। तो फिर से वो चीज़ है कि कहने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स, एंड समटाइम्स देयर आर some students who do not keep tacks in their mouth, or they do not keep tacks in their fingers, so they type anything and everything. Okay, यही चीज है। anyways, let us go with the explanation हम लोग देखते हैं इसका explanation क्या है। stanza 3 का, in this stanza the poet mentions things that are beautiful and bring us joy। तो फिर से again the poet is going to mention more beautiful things that are beautiful, and it gives us joy as well as peace। इसके साथ एक peace भी मैं ऐड कर देता हूँ, it gives us joy and peace। anything which is beautiful, it not only gives us joy but it gives us peace also। वो हमें खुशी नहीं देता, वो हमें शांति भी देता है, mental peace। ओके, ये चीजें क्या है, what are these things, what are these beautiful things? These include the sun, the moon, both old and young trees which grow and give comforting shade, especially to innocent sheep। ठीक है, तो ये क्या है, थ्रू sheep the poet means we human beings, we the people, हम जो इंसान है, human beings, we people। okay, so ये सुंदर चीजें क्या है, what are these beautiful things? We have sun, it is very beautiful, every day it rises, every evening it sets। okay, then the moon, it is so beautiful, people write so many poems on moon। then old and young trees, ऐसा नहीं कि only young trees, even old trees also, both old and young trees which grow and they give us comforting shade, whenever you are tired you can rest under the tree। and especially to innocent sheep here, as I told you, it means the people, हम लोग, इंसान जो है, इनको सबसे ज्यादा जो है इन सारी चीजों से, we the people, we get mental peace, we get joy, we get happiness from all these natural elements। so you see students that the poet mentions all the natural things here as beautiful, and that gives us joy and peace। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल चीज
No material things have been mentioned by the poet in this particular poem. It is only these natural things which provide us happiness and peace. Okay, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. Say for example, daffodils, a flower that makes the earth green and clear, and there are cool themes also. Rills, R-I-L-L-S. In the third stanza, you'll find rills. Rills means themes, okay? So daffodils एक बहुत beautiful flower है. Wordsworth का एक poem है daffodils. You can read that poem also. Okay, so daffodils make the earth beautiful and green, okay, and clear also, and there are cool streams. Okay, any traveler who is tired can wash his face, wash his body, okay, and his tiredness will be removed. So cool streams, we have so many beautiful things in the nature. We must learn to appreciate those things. हमें उन चीजों का appreciation करना चाहिए, and we must thank God for providing us with this natural, with all the natural things that we have around us. The poet also talks about summer season के बारे में poet बात कर रहे हैं. He is talking about the summer season when the lovely musk rose flowers, there are rose flowers which bloom, adding a shining sparkle to the season. So summer season में there are roses that bloom, and that adds extra shining sparkle to the season. तो समर सीजन में जो रोज जो है वो ब्लूम करते हैं, वो समर सीजन को और ज्यादा सुंदर बनाते हैं. The musk rose flowers, when they bloom during summer season, it provide the shining sparkle. It makes the summer season more and more beautiful. Okay, stanza 4, and that is the last stanza. And such too is the grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal dreams pouring unto us from the heavens brink. ठीक है, अभी इसका explanation क्या है? What is the explanation of this? The explanation of this is lastly, so finally, because it's the final stanza, so final stanza from and such too is the grandeur till heavens bring. यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए अपने बुक में. यू कैन मार्क इन योर बुक ऑल्सो इफ यू आर हैविंग द बुक इन फ्रंट ऑफ यू. अगर किताब आपके पास है. मैंने कहा कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है. So lastly, the poet talks about the beauty found in the impressive and magnificent memories of the mighty dead, specifically the martyrs who gave their lives for a noble cause. So you see that protecting the nature is also our responsibility, and we must not forget those who have given their lives by protecting the nature. हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि nature is what? Our earth is nature. We live in Meghalaya, say for example. So Meghalaya is also part of nature also. Okay, India, our country India. Okay, India is also, we can say, a part of nature only. And in order to save India, say for example, if I give a small example here, that our India was once invaded by the British. Britishers came and settled here. So our martyrs, शहीद जो है हमारे सोल्जर्स ने अपने जान पे खेल के they have defeated the Britishers, and while defeating the Britishers, many of our soldiers have given their lives and they became martyrs. So in one way, protecting India also means protecting nature and all the natural elements, right? So we must not forget them also. हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि beauty lies in appreciating our martyrs also, and we must not forget that. That is what the poet is saying, that beauty is found in the impressive and magnificent memories of the mighty dead. इनको mighty dead बोला गया. Not only dead people, they are mighty dead people. They have lived their life for a noble cause and they died for a noble cause. Especially the martyrs who gave their life for a noble cause. नेचर को बचाने के लिए, एक देश को बचाने के लिए इन सोल्जर्स ने अपना जान दे दिया. तो ये भी, they are also part of our nature only, and we must appreciate them also. And beauty is found in that also. Beauty इसमें भी है. They are also considered as beautiful things, and they have given us joy. You see today that I am sitting here in the comfort of my room and making this video. How is it possible? It was possible because they have given their life for us. इन्होंने अपना जान दिया हमारे लिए. The joy comes from the wonderful stories we have heard or read about them. Even the wonderful stories that we have heard from our fathers, grandfathers, mothers, grandmothers, those also give us, joy, happiness, peace from all around the world. Okay,
तो ये भी हमें खुशी देता है, पीस देता है। या तो वो कहानी हमने सुना है, या तो कहानी हमने पढ़ी। इट इज नॉट ओनली दैट यू हैव हर्ड स्टोरीज और आई हैव हर्ड स्टोरीज फ्रॉम माय मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इट इज नॉट दैट, वी हैव रेड मेनी स्टोरीज एंड दैट आल्सो गिव अस अ लॉट ऑफ जॉय। वो भी हमें बहुत खुशियां देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों से खुशियां बनते हैं। फ्रॉम द स्मॉल थिंग्स वी गेट हैप्पीनेस, है ना। इन कंक्लूशन, फाइनली पोएट ये कहता है कि नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो नेचर को एक फाउंटेन के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन, एंड दैट गिव्स अस एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो कभी खत्म ना हो। देखिए मैंने अभी अभी कहा कि वो हैप्पीनेस कहा जो खत्म हो जाए। यू बॉट एन आईफोन, आपने एक आईफोन खरीदा, वो तो कभी भी खराब हो सकता है, उससे हैप्पीनेस कहा। दैट हैप्पीनेस इज टेम्पररी। वो हैप्पीनेस जो आपका टेम्पररी है। आपने एक बहुत ब्यूटीफुल खाना बनाया, शायद वो हैप्पीनेस देगा, वो एक मेमोरी के तौर पे रह जाएगा। बट देन यू मेड अ वेरी वेरी टेस्टी फूड, दैट विल कम टू एन एंड, तो फट से खत्म हो जाएगा। बट दैट मेमोरी दैट यू हैव मेड अ beautiful tasty dish and everybody praised you for the beautiful dish, that will remain as a memory and that will give you happiness। वो आपका happiness है। तो happiness वो है जो कभी खत्म ना हो। And this everlasting happiness flows to us from the edge of the heaven। तो ये happiness हमें heaven से pour down होता है। happiness हमें heaven से pour down होता है। Okay, and that we get only from the natural element। तो happiness heaven से pour down होता है, नीचे उतरता है, और वही हमें खुशी देता है। और वो क्या है? ये नेचुरल चीजें ही है जो हमें खुशी देती है। तो दिस लाइन सजेस्ट दैट नेचर प्रोवाइड्स अस विद जॉय दैट फील्स इमोर्टल एंड हेवनली, है ना। और एक चीज है कि हेवनली, नाउ हेवन वी थिंक दैट हेवन इज अ प्लेस where we can go and there there will be a stream of chocolates, a river of chocolates। it is not like that। heaven is actually a state of mind। heaven kya hai? Heaven is a very beautiful place। it is a beautiful place, but it is a state of mind। heaven, there is no place called heaven। it is only our state of mind। ये हमारा state of mind है। if you live a very happy life, you are in heaven। अगर आप एक बहुत खुशी भरा जिंदगी बिताते हैं तो वही आपका स्वर्ग है, वही आपका हेवन है। there's no place called heaven and who is in heaven? किसने हेवन देखा? क्या कोई ऐसा है आपको जो आके आपको बोल सकता है कि हाँ मैंने हेवन देखा, मैं देख के आ रहा हूँ अभी? इट इज नॉट पिकनिक स्पॉट लाइक चिबागरे और एलोवेरा गार्डन, है ना। हेवन इज इटर्नल, वेर यू गेट इटर्नल पीस एंड हैप्पीनेस दैट यू फाइंड ऑन अर्थ ओनली। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पीसफुल है तो यू आर इन हेवन। ओके, तो दिस जॉय एक्चुअली गिव्स अस इमोर्टल हैप्पीनेस एंड हेवनली हैप्पीनेस। सिर्फ इमोर्टल नहीं, इट गिव्स अस हेवनली हैप्पीनेस। एक स्वर्ग जैसा सुख हमें देता है इसी धरती एंड मेकिंग इट टू द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो जो चीजें दैट नेचर प्रोवाइड्स अस विद जॉय, नेचर जो खुशी हमें देता है वो इमोर्टल है, तो कभी नहीं मरता है। नेचर जो खुशी हमें देता है, द जॉय दैट नेचर प्रोवाइड्स अस इज इमोर्टल, इज नेवर टू डाई। The happiness that nature provides us is also heavenly, okay, and that is the ultimate source of happiness that comes from nature। तो ultimate source of happiness कहाँ से आता है? वो nature से आता है और कहीं से नहीं। The ultimate source of happiness comes only from nature and nowhere else। okay, so this is the explanation of the poem A Thing of Beauty। if there is any part of the poem that you have not understood, you are very free to comment in the comment box also, don't worry with that। अब यहाँ पे हम लोग important word meanings देख लेते हैं। let us find out some important word meanings from here that you may not understand। तो bower सबसे पहले जो आता है वो है bower। bower का मीनिंग होता है shaded place, छाव भरा जगह, जहाँ आपको छाव मिलता है। तो we get shade under the tree only। okay, morrow यहाँ पे मतलब है tomorrow, कल। reading का मीनिंग क्या है? reading means form into a reed। now what is the meaning of reed? a reed is a circular arrangement of flowers or leaves or other materials often used for decoration। तो यहाँ पे reed जो है, पोएट ने उसे फ्लावर का ही एग्जांपल दिया है। reed means a garland kind, so these are flowers, okay, and you make a garland out of it, that is called reading। okay, form a reed, form into a reed, एक फ्लावर से अरेंज किया हुआ गार्लैंड टाइप। ओके, दैट इज यूज्ड जनरली फॉर डेकोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्पोंडेंस का मीनिंग क्या है। डिस्पोंडेंस मीन्स डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड और डिस्पिरिटेड। ओके, दुखी होना, निराश होना, उसका मतलब है डिस्पोंडेंस। डर्थ मतलब लैक ऑफ समथिंग।
कोई भी चीज का लैक होना, नहीं होना, ओके, लैक ऑफ समथिंग। नोबल नेचर्स मतलब गुड क्वालिटी, ओके। फिर ग्लूमी का मीनिंग आप लोगों को पता है, सैड है ग्लूमी का मीनिंग। पैल मतलब क्या है, फ्यूनरल क्लोथ और डार्क क्लाउड, ओके। पैल मतलब यहाँ पे फ्यूनरल का क्लोथ जो इस्तेमाल होता है फ्यूनरल पे, वो क्लोथ, या तो ये मीनिंग समझाता है कि डार्क क्लाउड, ठीक है। ये आपको पैल आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा थॉट स्टैंड। मैंने अभी अभी देखा था ये लाइन, जस्ट होल्ड द सेकंड, हम यहाँ पे मूव अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पेस। तो यहाँ पे पैल का मतलब डार्क क्लाउड्स, ज्यादा ज्यादा मीन करता है डार्क क्लाउड फ्रॉम आवर लाइफ, ओके। बून मतलब ब्लेसिंग, बून मीन्स ब्लेसिंग, ओके। देन रिल्स मतलब मैंने आपको बताया, रिल्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम, छोटे जो झरने होते हैं उनको कहा जाता है रिल्स। मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब है अ प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर वी स्टॉप टू सी मस्क रोज ब्लूम। तो एक ऐसा जगह फॉरेस्ट में जहां हम मस्क रोज को ब्लूम होते हुए, खिलते हुए देख सकते हैं, ओके। मस्क रोज हियर मीन्स वाइल्ड रोजेस, नॉट द गार्डन रोजेस दैट वी हैव, वाइल्ड रोजेस। ग्रैंडियो मतलब ग्रैंड स्प्लेंडर, कुछ चीज जो बहुत बड़ा है, ओके, बहुत महान है, बहुत बड़ा है, उसे कहा जाता है ग्रैंडियो। डूम्स मतलब इनएस्केपेबल डेथ, डेथ दैट यू कैनॉट एस्केप, डेथ दैट वन कैनॉट एस्केप। तो डूम का मतलब है ये, ओके। And then finally, the last four word means mighty dead means the legendary heroes who are now dead but immortal due to their deeds. So mighty dead मैंने आपको एग्जांपल दिया, our soldiers, okay. Soldiers of any country, I'm not talking of only India, but soldiers of any country who have died fighting for a noble cause, जो शहीद हो गए एक नोबल कॉज के लिए, जो शहीद हो गए, दे आर आवर लेजेंडरी हीरोज, ओके, बट दे आर इमोर्टल। ये कभी नहीं मरते हैं ऐसे हीरो, हम हमेशा उनको याद करते हैं। एनलेस माउंटेन, नेवर एंडिंग कैस्केड और सोर्स, एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म ना हो, एनलेस फाउंटेन, ओके। इमोर्टल ड्रिंक, नेक्टर, नेक्टर मतलब एक ऐसा ड्रिंक जिसे पीने से कोई मरता नहीं, somebody does not die, person does not die, एक ऐसा ड्रिंक, okay, if that person drinks he or she will never die, that makes one live forever, okay। तो immortal drink मतलब nectar that makes one live forever। अमृत हम लोग कहते हैं, इसे हिंदी में इसे अमृत कहा जाता है। अमृत मतलब एक ऐसा ड्रिंक जो पीने के बाद कोई मरता नहीं है। और ब्रिंक मीन्स एज, okay, last point, edge, okay, that is bring। So these are your word meanings, okay, these are your word meanings, and the poem comes to the end, with the end of the word meaning explanation also। If you wish to ask me anything, I'll give you 2-3 minutes, you can ask me something if there is anything to ask from your side। अगर आपके साइड से कुछ आप मुझे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट का वक्त आपको देता हूँ। I'll give you 2-3 minutes to ask something if you wish to ask। Meanwhile, okay, meanwhile, let me tell you, request you once again that I have recently opened a channel called Omni Gyan Short, Omni Gyan Short। प्लीज उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव द सेम लव एज यू हैव गिवन टू दिस चैनल। और वही लव उस चैनल को दीजिए जो लव आपने इस चैनल को भी दिया है, ओके। देयर यू विल फाइंड, देयर आर नो एक्सप्लेनेशंस देयर, बट यू विल फाइंड मेनी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल फैक्ट्स दैट विल इंप्रूव योर जनरल नॉलेज ऑल्सो, जो आपका जनरल नॉलेज भी इंप्रूव करेगा, ऑलराइट, जो आपका जनरल नॉलेज भी इंप्रूव करेगा, ओके। एंड अनदर थिंग दैट आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, मैं आपको एक और चीज के ऊपर अपडेट करूंगा, वो है CUET को लेके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन क्लास 12 फॉर क्लास 12। ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि CUET को लेके मेघालय में एक स्टेटमेंट पास हुआ है, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन पास्ड इन मेघालय, एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेके एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम मेघालय, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। दैट आई विल डू टुमारो, ओके, वो मैं कल करूंगा आपके साथ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ,
You can follow me on Instagram. If there is any question that you wish to ask, you can ask me there also. The link is again in the description. Link description में दिया गया है. My email ID is also in the description. It is better that instead of mailing me omnigyan538 at the rate of gmail.com, instead of mailing me, it is better that you can message me on Instagram. It is better to respond there. Okay, वहाँ पे respond करना ज़्यादा easy हो जाता है. ठीक है. So I think that there is no question from all of you. Okay, then I may safely end the video. मैं बहुत safely video को end कर सकता हूँ फिर. Okay. Okay, fine then. If there is no question from your side, then I will end the live streaming here. And I hope that you have understood the poem very nicely. Thank you so much for being there live. And finally, I would like to request all of you to subscribe to the channel and like and share my videos with all your friends. You can do one thing, please. You can do one thing. You can share the link on your WhatsApp. आप अपने WhatsApp status पे ये इन videos का link, especially class 12 students, you can post the link on your WhatsApp statuses also, so that everyone can see there, those students who are in class 12, and those students who do not know about my channel, they can also get benefit from it. And slowly I'm uploading notes on my channel, providing you notes on my website also, omnigyan.net. Please go and check out that website also, omnigyan.net. Again, the link of the website is also given on my description box. Link आपको description में मिल जाएगा नीचे, वहाँ पे जाके आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार. Okay, so finally, thank you so much for watching the video, and with love from Omni Gyan. All the best to all of you. Have a very good night. Thank you so much.